Hello friends, Namaskar dosto. Very warm welcome to another discussion of Forex and commodity market with SD. बहुत सारे happening हो गए इस हफ्ते में. Lot of central banks थे. We started with Bank of Japan and ended with Bank of England. In terms of my trading, it has not been a great week. I suffered some losses, some significant losses in some counters and obviously profit in some counters. So broadly not a big, but overall compared to जो volatility हम लोग देखे, my profit was not good. But it was a lot of significant week जिसके ऊपर ध्यान देना चाहिए. That is, let me show you this week. तो हम लोग स्टार्ट जो किए थे, दिस इज वेयर वी स्टार्टेड. बैंक ऑफ जापान का इंटरेस्ट रेट. बैंक ऑफ जापान ने एक सरप्राइज कोई मूव नहीं किया. व्हाट सरप्राइजिंग वाज कि वो लोग अभी भी बॉन्ड बाइंग कंटिन्यू कर रहे हैं और उनका कम्युनिकेशन से क्लियर था. वो चाहते थे कि रेट पॉजिटिव टेरिटरी में आ जाए, मतलब पॉजिटिव हो जाए, बट उनको कोई हरी नहीं दिखा कि रेट को इंक्रीज करना है शार्पली. रैदर दूसरा जो न्यूज था कि जापान का जो वर्कर यूनियन, दे नेगोशिएटेड मैसिव इंक्रीज इन वेजेस. सो दैट वाज अ मोर इंपॉर्टेंट न्यूज. क्या इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन माइंडसेट में सेट इन कर रहा है फॉर द फ्यूचर? दैट इज अ क्वेश्चन टू आस्क, जो जापान का लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट को इन्फ्लुएंस करने वाला है. सो दिस वाज. उसके बाद आया रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया. रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने मूड को डोविश बना दिया. उन्होंने हिंट दिया कि दे आर एब्सोल्युटली ऑन द पीक 4.35. तो मेजर जो सेंट्रल बैंक्स दिख रहे हैं वो अब और नहीं हाइक कर रहे हैं. वी आर कमिंग, एटलीस्ट एज पर द सेंट्रल बैंक्स, वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ इंटरेस्ट रेट जो बढ़ाने का हाइकिंग साइकिल. उसमें नेक्स्ट मेन जो डेटा था फॉर द नेक्स्ट वीक, दैट वाज ऑन वेडनेसडे. एवरीबडी वाज वेटिंग फॉर फेडरल रिजर्व. उससे पहले यूके का इन्फ्लेशन डेटा आया जो पाउंड के लिए थोड़ा मूड को डाउन कर दिया. ओवरऑल पाउंड एंड यूरो को दे बोथ गिव अ सेल सिग्नल व्हिच वाज नॉट स्ट्रॉन्ग वन बट अ सेल सिग्नल. और उसी रात को फेड आ रहा है. वी हैव ब्रॉडली आई थिंक डिस्कस दिस कि वी शुड कीप आवर एक्सपोजर रिलेटिवली लो अनलेस यू नो व्हाट यू आर डूइंग. सो इसमें जो ट्रेड लेके मैंने गया था डॉलर येन लॉन्ग. डॉलर येन लॉन्ग वाज अ ब्रेकआउट, क्योंकि जापान, बैंक ऑफ जापान के साथ ब्रेकआउट दिया था. इट वाज अ गुड मूव and I increased further position, but unfortunately Federal Reserve turned out to be dovish. उन्होंने किया नहीं कुछ. उन्होंने हिंट भी दिया कि इन्फ्लेशन मतलब के ऊपर उनका ध्यान है, बट एक क्लियर मेंशन किया कि they mentioned that the rate has peaked for this cycle and very likely cuts are coming. and despite ये जो जनवरी एंड फरवरी का इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ, उसके बावजूद भी वो लोग अभी 75, मतलब 3 रेट कार्ड्स अभी भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं. तो उसके बाद जून महीने का जो प्रोबेबिलिटी था रेट कार्ड, इट वेंट अप. एंड सो जून महीने एज it rate went up, the overall interest rate started coming down. Next day what we had important most is the Bank of England का interest rate decision yesterday. Bank of England turned out to be more dovish. बाउंड एक मंथली ब्रेकआउट के पास था. आई वॉज एक्सपेक्टिंग गुड मूव ऑन द अपसाइड. सो आई प्लेड, बट इसमें रिस्क भी था. सो फर्स्ट प्रायोरिटी इज रिस्क रिडक्शन. मेरे अंदर एक डाउट चल रहा था कि क्या करूं, बिकॉज द सेटअप, एज पर माय सेटअप, देयर वाज अ फुल बाइंग सिग्नल, वेयर एज आई वांटेड टू टेस्ट दिस आउट, क्योंकि इवेंट में कुछ भी हो सकता है. वी हैव सीन फेडरल रिजर्व सिग्निफिकेंटली चेंज कर दिया मूड को. एंड पाउंड में भी सिमिलर हो सकता था, बिकॉज बैंक ऑफ इंग्लैंड इज अ पाउंड स्पेसिफिक इवेंट. बट ऐसा हुआ नहीं. इन केस एक्चुअली ऑपोजिट हुआ. एंड दैट वाज सरप्राइजिंग भी नहीं था. मुझे शायद कॉशन लेना चाहिए था बिकॉज इन्फ्लेशन लो था. एंड दे ऑल्सो प्रोजेक्टेड वेरी लाइकली रेट कट्स कमिंग दिस ईयर. सो मेजोरिटी, और साथ में और भी मूड को खराब किया स्विस नेशनल बैंक ने.
They cut the interest rate. All of a sudden, it was not an expected one, and that gave an opposite bullish mood to that gave a bullish mood to the डॉलर डॉलर को एक सपोर्ट दिया. मैं एक्चुअली शिल्पा मेड को अचानक से देखने लगा. शिल्पा मेड कल आया था. हम लोग का जो ट्रेडिंग सेशन था उसमें वी डिड अ गुड ट्रेडिंग सेशन इन टर्म्स ऑफ इक्विटी एंड इन टर्म्स ऑफ ऑप्शंस. दोनों में प्रॉफिट आए, but not so good in terms of currency commodity, which is part of the market. But I do feel bad if currency commodity counters don't go well. So that's why this week was not so great. हम लोग इससे पहले previous जो week में we are gaining good, but this week was a bad week overall. We could have gained a lot. कोई भी trend is not a bit sustaining. तो इसके साथ हम लोग चले जाते हैं क्या हो क्या रहा है ओवरऑल हम लोग समझेंगे. इन द बॉन्ड मार्केट इज आल्सो कंफ्यूज्ड somewhat. This is you we can see it is staying above this strong level. Abhi bhi weekly we don't have a sell signal in 10-year long term bonds and the 30-year bonds. Still a full green candle. There is a risk of sudden upside move. There is a risk we can't deny. Also if it breaks down possibility जो दिख रहा था really there is Fed का सिग्नल के बावजूद भी लॉन्ग टर्म जो फंड्स लॉन्ग टर्म जो इंटरेस्ट रेट है वहां पे अभी भी सेल ऑफ नहीं दिख रहे हैं. ये एक एरिया है जो जिसमें मैं कांस्टेंट फोकस में हूं. दिस लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट क्या कर रहा है इन दिस साइकिल. सिमिलर टू गोल्ड में मैं फोकस्ड हूं व्हाट इट इज डूइंग इन दिस साइकिल. ये साइकिल थोड़ा डिफरेंट लग रहा है. दिस रिसेशनरी साइकिल मतलब दिस रिसेशनरी साइकिल में जो हम लोग है इट लुक्स अ बिट डिफरेंट देन द अदर्स. सो ये कुछ एरिया है जहां पे हम क्लोजली वॉचिंग. इफ द 30-year इंटरेस्ट रेट्स which is one of the possibilities if it starts going up, and that can create a major jolt in the risk market, matlab equity risk market. So yesterday in the evening we saw thoda short term chart mein jaate hain. Short term chart mein if we go to the 2-year interest rate we saw a bit of comeback. 2-year, 5 years, 7 year ये सारे जो इंटरेस्ट रेट है उसमें हम लोग एक कमबैक देखे. और जैसे कमबैक था डॉलर बेनिफिटेड. साथ में ये सेंट्रल बैंक जो डाइवर्ज कर रहे हैं सडनली और भी सेंट्रल बैंक्स धीरे धीरे बियरिश बन रहे हैं. सो वो सेंट्रल बैंक्स दैट मीन ये पॉलिसी डाइवर्जेंस डॉलर को बेनिफिट करने लगा है. एंड दैट इज एज वो अपने डॉलर को पुश कर रहा है. तो जैसे इंटरेस्ट रेट स्टार्टेड गोइंग अप डॉलर वेंट अप एंड कमोडिटीज अदर करेंसीज आल्सो स्टार्टेड सफरिंग. तो ये हुआ एक बैकड्रॉप. आज हम लोग देखेंगे कौन सा डेटा आ रहा है. दैट इज द फ्राइडे. ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है. जापान का जो इन्फ्लेशन डेटा दैट इज 2.8%, बट कॉन्सेंसस था ही ऐसा आएगा. इन्फ्लेशन इज ऑन द राइज. इन्फ्लेशन रेट बढ़ा है. दिस इज अ वेलकमिंग न्यूज, बट दिस वोंट इम्पैक्ट इंटरेस्ट रेट्स ऑफ द जैप क्योंकि बैंक ऑफ जापान का आउटलुक इज क्लियर. वो लोग कोई हरी में नहीं है अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के लिए. सो ओवरऑल जो दिख रहा है कि फ्राइडे आज नो मोर सिग्निफिकेंट कोई डेटा नहीं है. देयर विल बी सून जैसे सम ऑफ द फेड स्पीकर्स तो उनके जरिए मार्केट समझने की कोशिश करेगा व्हाट फेडरल रिजर्व इज थिंकिंग ऑन इंटरेस्ट रेट. नाउ फेडरल रिजर्व का कंट्रोल इंटरेस्ट रेट के ऊपर ज्यादा होता है ऑन द शॉर्टर टेन्योर में देन लॉन्गर टेन्योर. सो ये जो लॉन्गर टेन्योर इंटरेस्ट रेट में वी आर स्टिल सीइंग द बाइंग पुश. मतलब नीचे के तरफ मूव नहीं आ रहा है उतना स्ट्रॉन्ग. इट इज स्टिल होल्डिंग अप. So this is a concern. It has taken a turn. It is not bullish, but it is definitely not bearish. That is a concern. If this starts going up again, then the risky assets will be in trouble and dollar will start benefiting. So हम लोग अब आ जाएंगे करेंसी में. करेंसी में यूरो यूएसडी. कल मैं एक बार सोच रहा था आप to try out the euro USD long, but finally decided on the we were having a live session yesterday to do nothing in euro USD.
एक सेल सिग्नल आया है, बट इट हैज रीच्ड आवर दिस टारगेट एम्प्टी लाइन पे. So waiting game is now. So this is the unfortunate part of Indian forex trading, that you don't have the full time frame. Like global forex, you have the benefit of the whole time frame. Forex market never sleeps. It's almost not a full, almost a 24-hour market, 23 hour 15 minutes around. So next is GBP USD. This is where I got hard, but it was a calculated hard, क्योंकि इसीलिए मैंने फ्यूचर को छोड़ के ऑप्शन में एंट्री लिया. एंड GBP USD I did not took a trade. I rather took a GBP INR and GBP pound yen में मैंने स्क्वायर ऑफ कर लिया था 50%, but other 50% जो which I squared off today, it got hard. सो दैट्स यहाँ पे थोड़ा पेन हुआ है, जो नोटेबल पेन मान सकते हैं, क्योंकि यूजुअली आई यूजुअली रिमेन फोकस्ड ऑन द डायरेक्शन. तो रेनबो कल एक वार्निंग दे ही रहा था ऑन द जीबीपी यूएसडी. सो जीबीपी यूएसडी पाउंड येन, इट वाज गुड डिसीजन कि आप थोड़ा एग्जिट कर लिए. और मैं ये रिस्क के वजह से, बट आई वांटेड टू स्पेकुलेट, जो मैंने किया कि ऑप्शन में थोड़ा मूव किया. ऑप्शन जीबीपी का अभी भी उतना लिक्विड नहीं है, बट अबाउट 50-100 लॉट्स नियर द एक्सपायरी इज वेरी क्लोज. दैट्स ओके, बट गुड न्यूज की लिक्विडिटी बढ़ रहे हैं ऑप्शंस में. सो मेजोरिटी ऑफ द जो ऑप्शन का प्रीमियम था वो गल गया है. एंड सो वी हैड टू एग्जिट. जो भी प्रोटेक्शन है, वो भी जो भी पैसा मिला, दैट इज वे मोर देन ब्रोकरेज. सो ऑलवेज आपको रिस्क और जितना लॉस कम हो सके उसके ऊपर फोकस करना चाहिए. नेक्स्ट इज यूएस डॉलर येन. आई एम स्टिल होल्डिंग इट सम पार्ट, एंड कुछ मैं एग्जिट कर चुका हूं बिकॉज फेड बियरिश था, बट मैं डिड नॉट एग्जिटेड फुल्ली. एक्सप्लेन किए थे कल, क्योंकि कैंडल नीचे जाके बोल रहा है कि द ये जो बाई ट्रेंड इज स्टिल नॉट मे नॉट बी ओवर. सो डॉलर येन आई कंटिन्यू टू होल्ड. इंक्रीज का भी नहीं सोच रहे हैं. नेक्स्ट वीक विल सी एंड देन विल थिंक, बट इंक्रीज I can increase further in USD JPY, क्योंकि एग्जिट करना पड़ा था बिकॉज ऑफ फेडरल रिजर्व. एंड साथ में मैं फ्यूचर डेज में, अभी तो ऑपोजिट मूव हो रहा है इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम. नीचे का RSI X से क्लियरली दिख रहा है. सो आई एम ऑल्सो क्लोजली लुकिंग एट दिस JPY INR फॉर एनी फ्यूचर break possibility नीचे की तरफ. Then I can go short further in JPY INR. Yen can go down. जैसा Bank of Japan is still printing a reserve with quantitative easing, yen can still go down significantly, with INR being managed by Reserve Bank of India. USD INR जो है, this is significantly weak. This has not shown a weakness like this one. मतलब ये जो रिवर्सल हुआ, what a move reversal. डॉलर स्ट्रॉन्ग, जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ा, रूपी स्टार्टेड गेटिंग हार्ड. तो रूपी में आरबीआई बैठा है, मैनेज करता है, सो विल प्रेफर नॉट टू डू. बट यहाँ पे एक बाई सिग्नल आ रहा है, इसको रादर एंजॉय किया जा सकता है पुट बेच के. रेगुलरली पुट इनकम से you can get some of the money. I really don't like much of USD INR, as it is well managed by the Reserve Bank of India. But with INR being this weak, I'm not planning to short this pound, euro and JPY against INR. Rather, I'll prefer to short them against dollar. Next is euro yen and pound yen. Pound yen I exited yesterday and finally exited today. Euro yen I'm still on this one. आज एक करेक्शन की सिग्नल आ रहा है with red cap, so I have today exited 50% quantity and I'll remain more with 50% unless I see a bit further drawdown. Let's see how it goes. Next is pound yen. पाउंड येन में दिस इज अ बिगर ड्रॉ डाउन. सो येस्टरडे विदाउट रेड कैप, क्योंकि बैंक ऑफ इंग्लैंड आ रहा था और मैं डिसाइड किया था जीबीपी आईएनआर मैं लेके जाऊंगा. सो दैट्स व्हाई आई रिड्यूस द येस्टरडे पाउंड येन. आई हैव डिस्कस्ड दिस ड्यूरिंग आवर लाइव सेशंस, and this is pound yen. I've exited full. I'll now enter only above 192.67
और प्राइस एक्शन बुलिश, तो वो अलर्ट लगा दीजिए एंड देन आई विल थिंक अबाउट व्हाट टू डू इन पाउंड येन. सो अभी का मोमेंट इज नॉट करंटली नॉट गुड टू गो लॉन्ग. इट इज अ वेटिंग जर्नी. लेट्स सी अभी कोई भी ट्रेंड, जैसे यहाँ पे बढ़िया गेन मिला था, यहाँ पे गुड गेन, यहाँ पे ट्रेंड ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं किया इन जीबीपी और बोथ साइडेड वोलेटिलिटी बढ़ रहा है. दैट मीन्स आई हैव टू मैनेज द रिस्क एक्सपोजर बाय रिड्यूसिंग द ओवरऑल क्वांटिटी. और एक जो ट्रेड सडनली कल शार्प रिवर्सल बट रेनबो कॉट इट, दैट वाज द सिल्वर. देयर वाज आफ्टर द ब्रेक, इट वाज अ सडन डाउन मूव और वो दिख ही रहा था बिकॉज इंटरेस्ट रेट वाज गोइंग अप एंड डॉलर वाज गेटिंग बिड. As dollar getting bid, interest rate and dollar double dhamaka pushed gold and silver down. So currently gold silver exit, it's a big move hua hai. I'll prefer to wait on the sideline rather than look for opportunities. और अपॉर्चुनिटीज जो ढूंढेंगे दैट इज आज तो नहीं बट नेक्स्ट वीक 125 में भी फोकस कर सकते हैं फॉर शॉर्टर टर्म स्विंग अपॉर्चुनिटीज. इस करंटली आई वाज फोकस मोर ऑन द डेली चार्ट. सो अभी ये डेली चार्ट के बेसिस पे जो ट्रेड थे दैट हैज बीन एग्जिटेड. लग ही रहा है वी आर गोइंग टू सी मोर स्मॉल स्विंग्स. सो स्मॉल स्विंग्स वी हैव टू कैच इन 125 मिनट्स चार्ट. इसके साथ हम लोग एक बार देख लेंगे अदर कॉमोडिटीज को. कॉमोडिटीज में जिंक डिड नॉट वर्क आउट. इसमें आई वॉज क्लोजली वॉचिंग फॉर अ बाई अपॉर्चुनिटी बट आई फाइनली डिड नॉट एंटर क्योंकि कॉन्फर्मेशन नहीं था. व्हाट आई एम गेटिंग टुडे इज जिंक्स बिलो दिस लेवल एंड स्ट्रगलिंग. सो जिंक वी कैन गो शॉर्ट. ये 125 मिनट्स में वी हैव डिस्कस्ड कि कल क्या प्लान है जिंक का. So zinc plan is once we are here, we get a full breakout of this area, then only we think of buying or we think of selling with a full red candle like this one or at the breakdown. This candle is coming with what? A white cross above the candle body. मतलब ठीक नहीं है ये कैंडल. तो ये सिचुएशन में थोड़ा वेट कर जाना चाहिए फॉर फर्दर ब्रेकडाउन. लेट्स वेट फॉर नेक्स्ट वीक और एटलीस्ट फर्दर मोर कॉन्फिडेंटली ब्रेकडाउन जब आ रहा है. करंटली देखिए प्रोबेबिलिटी इज 50-50. तो एक रेंज हो चुका है, स्टॉप लॉस स्क्वीज हो चुका है. हो सके फिर से और एक राउंड ऑफ बाइंग आए और जिंक एक रेंज में बिहेव करे. सो इट इज रिस्की टू शॉर्ट जिंक राइट नाउ. कॉपर इज इतना वोलेटिलिटी में. लेट्स लुक एट व्हाट द कॉपर इज डूइंग. थोड़ा पहले डेली चार्ट. कॉपर भी आप 125 मिनट्स में ट्रेड कर सकते हैं. वी आर गेटिंग अ फुल ग्रीन कैंडल. अगर एसटी मोमो अपने साथ हुआ वी कैन गो लॉन्ग बट 125 मिनट्स में आप देखेंगे इट इज नॉट रेडी. लेट्स वेट फॉर अ रेनबो बाई सिग्नल टू मिनिमम डू एनी काइंड ऑफ बाइंग. और ग्रीन कैंडल जो हम लोग डेली में देखे उसके साथ चाहिए एसटी मोमो बुलिश जो अभी है नहीं. तो डेली में आप एसटी मोमो बुलिश अलर्ट लगा दीजिए. शॉर्ट मोमेंटम बुलिश एंड दैट्स इट. हो गया ट्रेडिंग. बाकी जो है क्रूड हैव एग्जिटेड एंड वेटिंग ऑन द साइडलाइन. This is 125 minutes move. It is getting bearish. It is reaching the first target it has reached. Empty line. So let's see what crude further does. Before taking any position, copper ST Momo bullish का alert आ रहा है, but this alert needs to be valid till closing. Okay, and 125 minutes में rainbow buy signal we don't have it yet. अभी तक सिग्नल नहीं आया. लेट्स वेट फॉर द रेनबो बाय सिग्नल एज वेल और उस सिग्नल क्लोजिंग तक रहना चाहिए. सो ये डेली जो आज सिग्नल आ रहा है दिस शुड बी वैलिड टिल क्लोजिंग और नियर क्लोजिंग. नेचुरल गैस जो दिख रहा है क्रूड ऑयल और एक बार देख ले. क्रूड ऑयल इज मिक्स मार्केट बेटर टू अवॉइड. नेचुरल गैस मिक्स मार्केट वही रेंज में है.
नो क्लियर डायरेक्शन, बियरिश रेंज, बाय करने का कोई मतलब नहीं बनता. सेल रेजिस्टेंस कुड बी अ सॉर्ट ऑफ प्रेफर्ड ट्रेड्स, बट इट इज बियर के हाथ में ज्यादा है. बुल विन प्रोबेबिलिटी इज वेरी लो, 7% अराउंड. बियर विन प्रोबेबिलिटी 54 और कंसोलिडेशन होने का 43. सो इट्स अ मिक्स मार्केट सिचुएशन बियरिश रेंज की तरफ. तो ये रहे कमोडिटी मार्केट के ट्रेड्स हैव ब्रॉडली कम डाउन. जो ट्रेड में ज्यादा फोकस है दैट इज द डॉलर येन. इसका ट्रेंड नहीं लग रहा है कि दिस हैज एंडेड राइट नाउ. बुलिश अभी भी खत्म नहीं हुआ लग रहा है, इट कैन गो फर्दर अप. अभी भी कैंडल ऊपर जा रहा है दोनों साइड, मतलब वी कैन सी सम zigzag volatility, बट प्रेशर अभी भी बुल के तरफ. सो दिस इज वन ट्रेड. And I'm looking at further जो possibility of comeback in the euro yen and pound yen and JPY INR का नीचे के तरफ breakdown. but उसमें USD INR is मतलब ऊपर के तरफ जा रहा है. INR is significantly weak. That's a bad news for JPY INR breakdown. So that's it from my side, friends. I hope if this video will be helpful to decide on your forex trading, your forex decision. All the best from my side and happy trading.